Jai Hind students. So today I am starting the new topic frustum of a cone. तो दिस इज द फ्रस्टम. ये बनता कैसे है जब हम किसी कोन को जो है कहीं मिडिल में से उसके काट दें. ठीक है, तो ये लेट कैपिटल आर एंड स्मॉल आर द रेडियाई ऑफ टू एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम. ये दो एंड है फ्रस्टम के. ऊपर जो है ये बड़ा वाला सर्कमफेरेंस आपको इसका दिख रहा है, लेट इट्स रेडियस इज कैपिटल आर. और ये जो छोटा वाला है पोर्शन, ये जो छोटा वाला आपका एंड दिखाई दे रहा है स्मॉलर एंड, लेट इट्स रेडियस इज स्मॉलर आर. फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज द हाइट ऑफ द frustum, and this is the slant height of the frustum. This one is also slant height of the frustum. Then some formulas are there. The first one is volume of frustum is given by 1/3 pi into h multiplied with in bracket capital R square plus R square plus R into R. Slant height of the frustum is given by L, that is given by under root of h square plus R minus R whole square. CSA of the frustum is given by pi in bracket R plus R capital R plus small r into L, and TSA of the frustum, that is pi into capital R plus R into L plus this area टॉप एरिया जहाँ पे आपकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, एंड दिस बॉटम जहाँ पे रेडियस कितनी है आपकी स्मॉल आर, दैट इज पाई आर स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि अ ड्रिंकिंग ग्लास is in the shape of a frustum of a cone of height 14 centimeter. The diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. कोई आपको ग्लास दे रखा है जो कि फ्रस्टम फॉर्म में है और इसके दोनों एंड के डायमीटर्स गिवन हैं, यानी जो आपको स्मॉल जो आपकी कैपिटल रेडियस है वो आपको दे रखी है 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, and the smaller radius is given 2/2 which is 1 centimeter, and height of the frustum is given 14 centimeter. जैसे यही आपका फिगर है, इसमें कैपिटल R आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर and the small r is given 1 centimeter and height is given 14 centimeter. This height is given 14 centimeter. Now for finding the capacity, first we will find the volume of frustum. The volume of the frustum is given by 1/3 pi into h in bracket capital R square plus R into R. These are the values 1/3 into 22/7, h is given 14 in bracket 2 square plus 1 square plus 2 into 1. Now just look here, 2 to the 4, 1 square 1 5 into 7. So this will become 22/3 and this 7 into 2 into 7. So what will happen? When we will multiply these 3, 7 to the 14 into 20 to the 303 up 8/3, which is 102.67 centimeter cube. This is the volume of the frustum of the glass. Now the capacity of the glass, for converting this centimeter cube in liters, we will divide it by 1000. So what we will get? 0.0 this one 1 2 3 0.10267 liters. So what will be the capacity? 0.10267 liters. Now this is question number 2. The slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter. This is the slant height of the frustum, which is L, is given 4 centimeter, and the perimeters of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. जो आपका ये वाला एंड है इसका आपको सर्कमफेरेंस गिवन है कितना? लेट इट्स रेडियस इज कैपिटल आर, तो इट मीन्स द सर्कमफेरेंस इज गिवन 2 पाई इंटू कैपिटल आर विच इज 18 सेंटीमीटर, इसलिए आर इज इक्वल टू 18/2 पाई, देयरफॉर आर विल बी 9/pi centimeter, and this 2 pi r, this circumference is given 6 centimeter, therefore the small radius r will be given by 6/2 pi, that therefore r is equal to 3/pi centimeter. Also it is given the slant height of the frustum L is given 4 centimeter. Question is this: find the CSA of the frustum. Now the surface area of the frustum will be given by pi into r plus r into L, which is pi in bracket 9/pi plus 3/pi into 4.
this 9 and 3 12 upon pi into 4, pi to pi is cancelled, 12 into 4 will left here, which is 48 centimeter square, 48 centimeter square. It's okay. So what will be the curved surface area of the frustum? That is 48 centimeter square. Now this is question number 3rd. A face, the cap used by the Turks is shaped like the frustum of a cone. If its radius on the open side is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter and its length height is 15 centimeter, find the area of material used for making it. ये कोई आपकी फेज है, कोई कैप है जिसको कि टर्क लोग जो है यूज करते हैं. इसमें रेडियस ऑफ अपर बेस दैट इज गिवन स्मॉल आर इज 4 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द ओपन साइड वाला जो बेस है कैपिटल आर जहाँ पे खुला है उसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट स्मॉल एल इज गिवन 15 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट. तो नाउ द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक द कैप विल बी इक्वल टू दिस CSA ऑफ द फ्रस्टम, पूरा CSA of the frustum and plus area of this top. So what it will happen, CSA of the frustum pi into r plus r into L plus this area pi into capital R square, that is 22 upon 7 into 10 plus 4 into 15 plus 22 upon 7 into 4 square. When you will solve this, you will get 22 upon 7 into 14 into 15. This will become 14 into 15 plus 22 upon 7 into 16. This will become 7 to the 22 into 2 into 15 plus when we will multiply this will be 352 upon 7. When we will multiply this 22 the 44 into 15, 15 for 60, 660 plus when you will divide this you will get 50.28. Just add them, you will get 710.28 centimeter square. So therefore how much area of the material used for making this cap? That will be 710.28 centimeter square. Now this is question number 4. A container opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter respectively. कोई कंटेनर है फ्रस्टम शेप्ड का है जिसकी जो है रेडियस ऑफ अपर बेस यानी जहाँ पे ओपन है उसकी कितनी है रेडियस दे रही की 20 सेंटीमीटर और लोअर बेस की जहाँ पे वो बंद है दैट रेडियस स्मॉल आर इज गिवन 8 सेंटीमीटर एंड दिस हाइट ऑफ द फ्रस्टम h फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज ऑल्सो गिवन हाउ मच 16 centimeter. The question is this: find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of 20 per liter, and also find the cost of metal sheet used to make the container if it cost rupees 8 per 100 centimeter square. Take pi 3.14. अब हमने क्या करना है कि इसमें जितना लीटर पहले मिल्क आएगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट निकालनी है किस रेट से. अगर आपको ये गिवन है कि 1 लीटर जो मिल्क है वो आपका 20 रुपीज़ का आता है, तो फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटी इन लीटर्स फर्स्ट वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम. नाउ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, दिस फ्रस्टम शेप्ड कंटेनर विल बी गिवन बाय 1/3 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस R इंटू R इंटू H. 1/3 into 3.14, pi is given here 3.14 and here is 20 square plus 8 square plus 20 into 8 into 16 centimeter cube. This is 3.14 upon 3 into this 16 here. This is 20 square 400, 8 square 64, 28 the 160. This is 3.14 upon 3 into 16. When we will add them, we will get 624. And after the calculation, it will come 10449.92 centimeter cube. So what is the volume of the frustum shaped container? That is 10449.92 centimeter cube. Now the capacity of the container, this capacity can be converted, this volume will be converted in the capacity by dividing 1000 and it will converted into liters. So therefore
capacity of the container will be 1044.992 divided by 1000. This will become 10.449 liters. तो कितनी कैपेसिटी हो जाएगी कंटेनर की, कितना मिल्क आ जाएगा इसमें, दैट इज 10.449 लीटर्स. अब आपको कॉस्ट निकालनी है. 1 लीटर का कॉस्ट दे रखा है ₹20. तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क विल बी ₹20 into 10.449. ओके, तो इट विल बिकम 208.98 rupees. तो व्हाट विल द टोटल कॉस्ट ऑफ द मिल्क, दैट इज 208.98 rupees. Now again the question asked, also find the cost of metal sheet used to make the container if it costs ₹8 per 100 centimeter square. अब दूसरा क्या है, इस कंटेनर को बनाने के लिए कितना सीट यूज होगा उसका हमने कॉस्ट निकालना है. तो फर्स्ट जस्ट टेल मी metal sheet used to make the bucket, this container bucket, this is the bucket shaped. Okay, this container what will be the, that will be CSA of the frustum. ये आपका CSA इसमें यूज होगा प्लस दिस बेस एरिया, एरिया ऑफ द बेस एरिया ऑफ द बकेट. तो दैट विल बी गिवन बाय पाई इंटू एल इंटू आर प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर. तो फर्स्ट फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम. द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम विल बी गिवन बाय एल इक्वल टू अंडर रूट आर माइनस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विच इज 20 minus 8 whole square plus 16 square. 20 minus 8 is 12 whole square plus 16 square. 12 square is 144, 16 square is 256. When we will add them, we will get 400. Square root of 400 is 20 centimeter. So what will be the slant height of the frustum? That is 20 centimeter. Now metal sheet used to make the bucket, that will be CSA of the frustum, this CSA and plus area of this base. Okay, so CSA of frustum will be given by pi into L r plus pi into r square. Just insert all the values. 3.14, slant height L is 20 plus 20 plus 8 plus 3.14 into 8 square. This is 3.14 into 20 and 20 plus 8 is 28 plus 3.14, 8 square is 64. When we will multiply this term, we will get 1758.4 plus this is 200.96. We will add that 1959.36 centimeter square. So how much metal sheet will be used to make the bucket? That is 1959.36 centimeter square. अब हमने आपको अब इसको क्या करना है, हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है. तो आपको कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 100 centimeter square is ₹8. तो देयरफॉर रेट ऑफ 1 centimeter square विल बी 8/100. ये 100 से 1 कैसे आया, डिवाइड करके. 100/100 is 1. तो देयरफॉर here what we will do in the right side, we will also divide with 100. So therefore rate of 1 centimeter square will be ₹8/100. Therefore total cost of metal sheet, that will be ₹8/100 into this metal sheet, area of metal sheet, that is 1959.36. So when you will multiply this, you will get 156.75 rupees. So what will be the total cost of metal sheet to make this frustum shaped bucket? That is 156.75 rupees. Okay. Now this is question number 9. A metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. कोई आपका एक कोन है, मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है, जिसकी हाइट कितनी है वो दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर. ठीक है, और इसका वर्टिकल एंगल यानी ऊपर वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री. इसको जो है किसी प्लेन से इसके जस्ट मिडिल में कट किया जाता है. ठीक है, और उसके बाद जो फ्रस्टम मिलता है हमें, दिस इज द फ्रस्टम BEDC. ये जो हमें एक फ्रस्टम मिलता है, दिस फ्रस्टम is now can be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter. तो find the length of the wire. तो पहले हमें ये कोन गिवन है. ठीक है, गिवन क्या है, अ कोन ADC in which the vertical angle A is 60 degree and height of the cone AO dash is given 20 centimeter. This cone is cut down into two parts parallel to its base at the height of 10 centimeter. यानी यहाँ पे इसको कट कर दिया गया है. तो OO dash this will be 10 centimeter. Now in triangle AOB, now just look here, this whole angle is 60 degree
तो these two triangles are congruent, so this will be 30 degree. This angle, only this angle will be 30 degree. Now in triangle AOB, OB upon OA, this will be tan 30. The OB is equal to OA into tan 30. यानी OA is tan into tan 30. तो OB is equal to tan into tan 30 is 1 upon under root 3. तो what is the value of OB? That is tan upon under root 3. और जिसको कि मैंने यहाँ पे किससे दिखाया है? स्मॉल r. Similarly, in triangle AOC, what will happen? This OC upon OA, this will also be equal to tan 30. Therefore, OC will be OA into tan 30 and OC will be 20 into 1 upon under root 3. So OC will be 20 upon under root 3, which I have taken here कैपिटल R. अभी इस टाइप से आपका जो है फ्रस्टम बन गया, ये इसकी रेडियस स्मॉल r कितनी हो गई? 10 अपॉन अंडर रूट 3 सेंटीमीटर और कैपिटल R कितनी हो गई? 20 अपॉन अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। और ये इसकी हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक कितनी? 10 सेंटीमीटर। इस फ्रस्टम को नाउ इट कैन बी ड्रॉन इनटू ए वायर, इसको एक जो है वायर में ड्रॉ कर दिया। तो शेप ऑफ द वायर इज सिलेंड्रिकल और गिवन है आपको कि रेडियस diameter of the base of cylinder that is given 1 upon 16 centimeter. Therefore, the radius will be 1 upon 16 divided by 2, which will be equal to 1 upon 32 centimeter. So, therefore, the radius of the base of the cylindrical wire will be, which is I am taken here x will be 1 upon 32 centimeter. We have to find the length of the wire. So, let the length of the wire is L. Suppose this length is L. ठीक है, अब इसी फ्रस्टम से हमने क्या है? एक वायर बनाया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट विल बी देयर? द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, दिस वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम विल बी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला इज देयर 1 upon 3 pi h कैपिटल R square plus R into R is equal to pi into radius is x, I have taken x square into L. So this is h r square plus small r square plus r into r is equal to this 3 will come here 3 x square into L and pi is cancelled. This pi is cancelled. Okay. So now put the value. H is 10. This is r 20 upon under root 3 whole square plus 10 upon under root 3 whole square plus 20 upon under root 3 into 10 upon under root 3 will be 3 into x is 1 upon 32 whole square into L. Now 10 into 20 square is 400 upon 3, 10 square is 100 upon 3 and 20 into 10 200, root 3 into root 3 is 3 is equal to 3 into L upon 32 into 32. Now just look here, this is 10 upon 3 and 400, 500 and to 700 into 700 will be equal to 3 into L upon 32 into 32. Therefore, L will be 10 into 700 into 32 into 32 divided by 3 into 3. So that will be equal to 796,444.44 centimeter, and for converting it into meter we will divide it by 100. It will become 7964.44 meter. So this will be the length of the cylindrical wire. So that's all for today. Thank you very much.